Hello everyone, welcome to Shifting Gears and welcome inside the 2023 Citroen C3 Aircross SUV. ये एक 5+2 सीटर SUV है, यूनिक टू द सेगमेंट. इस गाड़ी की कंपटीशन है विद द Honda Elevate, MG Aster, Hyundai Creta and Kia Seltos. So प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट और गेज कर सकते हो. वी डोंट नो द प्राइसिंग येट बिकॉज गाड़ी जो है वो लॉन्च नहीं हुई है. बुकिंग्स विल स्टार्ट इन सितंबर, डिलीवरीज विल स्टार्ट इन अक्टूबर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार फॉर ब्रांड Citroen हियर इन इंडिया. Citroen ने अपनी C3 B हैचबैक काफी समय पहले लॉन्च की है इन द इंडियन मार्केट एंड देयर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ इट. ये जो C3 Aircross अभी लॉन्च होने वाली है, दिस इज ओनली गोइंग टू कम इन अ सिंगल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन. नो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड नो डीजल इंजन ऑप्शन और नो हाइब्रिड ऑप्शन एट द मोमेंट. सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में. बट बिफोर वी डू दैट, डू चेक आउट द अदर वीडियोज. एक जहां पे हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में बात करते हैं एंड वन मोर वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट द स्पेस, द क्वालिटी, द इंटीरियर पैकेजिंग एंड द वर्सेटिलिटी ऑन द इनसाइड ऑफ दिस C3 Aircross with that 5+2 seating layout. Now let us talk about the numbers. अब ये जो SUV है, you can call it a crossover as well, you can call it a station wagon as well, whatever you would like. इसके साथ आपको मिलती है PureTech 110 पेट्रोल इंजन. दिस इज अ turbocharged 1.2 liter motor producing 110 PS of power at 5500 RPM and 190 Newton meters of torque at 1750 RPM onwards. ये एक 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है और इसके साथ आपको एक 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. पेट्रोल टैंक कैपेसिटी इज 45 लीटर्स और कंपनी का क्लेम है ये गाड़ी आपको 18.5 kmpl का माइलेज ऑफर करेगी. और ग्राउंड क्लियरेंस नंबर जो है दैट इज 200 मिलीमीटर्स. सो इट इज ट्राइंग टू बी दैट SUV दैट ऑल ऑफ अस लाइक इन द इंडियन मार्केट. इंडिया में SUVs सभी लोगों को खरीदनी है एंड दैट इज व्हाई दिस कार इज नाउ एग्जिस्टिंग, दिस इज बीइंग लॉन्च्ड. ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, Citroen ने कहा है that a lot of you all have been asking for an automatic from the brand and they are working on it and it will come in due course of time. It is not too far away. So we are expecting that towards the end of this year or maybe in the first quarter of the next calendar year, इस गाड़ी के लिए आपको एक ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाएगा. Now we don't know if that will be an AMT or a torque converter or a DCT, so let's wait and watch. Now one thing that I have to mention is that when I was coming for this drive, when I was on my way, ज़्यादा expectations मेरे इस गाड़ी से नहीं थे in terms of what the engine is in capacity and the outright numbers which we already knew, and also just because of the form factor of this vehicle. लेकिन जब से मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, ever since I started experiencing it, I could make a lot of sense out of it. And one thing I just want to get out of the picture right now is that ये गाड़ी बिल्कुल भी underpowered feel नहीं होती है. Today morning we were 4 healthy adults inside this C3 Aircross with luggage. The average weight would have been almost 80 kgs. और उस situation में ये गाड़ी out here on the ECR road in Chennai, it was sprinting effortlessly out on the highway and underpowered. ये चीज आपको तभी लगेगी जब आप सिर्फ स्पेक्स पढ़ोगे, लेकिन जब आप इस गाड़ी को चला लोगे your perception will completely change. So I would insist that don't just reject this vehicle based on specs. Go get a test drive and then try and make your analysis on that basis. अभी चलिए बात करते हैं NVH के बारे में सबसे पहले, because that has been very impressive. It is Hyundai levels of refinement which you are getting in this C3 Aircross and that says a lot.
ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट्स में जहां भी Hyundai अपनी गाड़ी बेचते हैं, दे हैव द मोस्ट रिफाइंड cabins, एंड ये C3 Aircross, it is just as good. It is very quiet on the inside. जब आप इस गाड़ी को हाईवे पे चलाने वाले हो, इंजन नॉइज जो है कैबिन में बिल्कुल भी क्रीप नहीं करती है. राइट नाउ वी आर एट 80 किलोमीटर पर आवर, 86 किलोमीटर पर आवर. नो इंजन नॉइज एट ऑल. एट स्लो स्पीड्स एज वेल, इट फील्स वेरी वेरी क्वाइट. ये एक 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल है, बट इट जस्ट फील्स फैंटास्टिक. एंड राइट नाउ आई एम एट 90, approaching 100 kilometers per hour. The cabin experience is really good. ज़्यादा wind noise भी cabin में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. So the NVH is really great, and the brand has done a fantastic job in packaging and sound insulation. So I think you will be a stress-free driver for a long time अगर आप इस गाड़ी में daily commutes करने वाले हो, because there is no noise that is going to add to your stress. The next thing that I want to talk about, very important, is the steering wheel. Flat bottom design है. Steering wheel पे आपको leather wrap मिलता है, and it feels of the right size. कुछ लोगों को ये wheel शायद थोड़ा छोटा लग सकता है, but I am okay with it. The steering wheel feel and response is very good. City speeds पे it is very light. Highway पे it weighs up quite nicely. और सबसे अच्छी बात यह है दैट देयर इज जेनरस अमाउंट ऑफ सेंटर पुल बैक. सेंटर में ये स्टीयरिंग व्हील डेड नहीं है. यू नो, इट डजंट जस्ट स्टे इन अ एंगल, जस्ट डायरेक्ट इट समवेयर एंड इट कम्स बैक टू द सेंटर पोजीशन. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट, बिकॉज आज की डेट में जितने भी EPS यूनिट्स वाले गाड़ियां आप चला लोगे, दे हैव सम डेड एरिया इन द सेंटर. This feels very good, and the steering wheel is also responsive. So when you make sharp turn inputs, इस तरह से emergency maneuvers अगर आप encounter कर लोगे, the steering wheel gives you very good confidence of where the wheels are pointing. So you can push this car hard, and you know, you can exploit all the performance that this motor has to offer. On a personal basis, on a daily basis, I drive a Honda Jazz at home and a Honda City. So that is a reference point that I am giving you, and fast-paced lane changes at 90 kilometers per hour. Good feel of the wheel. So the steering wheel, nice and responsive. लेकिन ऐसा नहीं है that when I say that it weighs up at high speeds, it feels heavy. It is still easy to maneuver with one hand as well. And if I have to just come to a halt, let me show you that steering wheel को पूरी तरह से लॉक टू लॉक टर्न्स के टाइम मूव करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. वन फिंगर ऑपरेशन भी आप कर पाओगे. सो द स्टीयरिंग व्हील फील्स गुड. नाउ लेट अस चेक आउट द एक्सेलरेशन इन 3, 2, 1. दिस इज अ टर्बो पेट्रोल C3 Aircross SUV and some wheel spin even in second gear. Listen to the engine. Not at all coarse inside the cabin. एक 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी ऑन द इनसाइड इट डजंट साउंड ग्रफ. सो इसके वजह से आपके पैसेंजर्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे इनसाइड द कैबिन. वी आर ओवर 130 किलोमीटर्स पर आवर ऑलरेडी, एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू पुल. सो इवन दो दिस इज अ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर मोटर, इट कैन डू serious triple digit speeds. It is not completely slow as an engine in terms of outright performance. So the motor is punchy, and the good thing is it has a healthy dose of torque. 190 Newton meters is a lot. अगर आप इस सेगमेंट की और कोई भी गाड़ी कंसिडर कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल द क्रेटा और द सेल्टोस और द एलिवेट, इनके जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन्स हैं उनके साथ अगर आप इस इंजन को कंपेयर करोगे, अभी आउटराइट इंजन कैपेसिटी तो कम है, यू नो द नंबर, बट द पावर आउटपुट इज रिस्पेक्टेबल. 110 PS is not bad at all, but then the torque is much more superior than those NA petrols, those 1.5 liter petrol engines. And because of that torque number, you know, you have very good pulling power.
आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंट डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है. If you are in that ideal torque band, just get on the gas and this C3 Aircross SUV, it will keep moving forward with confidence. ज़्यादा टर्बो लैग भी नहीं है, ज़्यादा लल एरिया भी नहीं है, lower down in the rev range, so just stomp on the accelerator and you will be able to make progress. Let me demonstrate that to you right now. So I am in 6th gear and I am going to drop the speed close to 40 kilometers per hour. All right, let us check out if it does drop to 40 without any hesitation. Right now अगर आप 50 के नीचे 6th गियर में इस गाड़ी को चलाने की कोशिश करोगे, अंडर 50 आपको थोड़ी नॉकिंग, थोड़ी हेजिटेशन फील होगी. You know, it does show that 3-cylinder thrum right now. You can also hear it. But now I am at 50 kilometers per hour. No throttle input, by the way. 52 kilometers per hour. It is gently picking up pace. And if I just get on the gas, right now the engine RPM is just above 1000 and I am crossing 60. Now 65. Now I am at 70. Of course it is slow. इस तरह से आप 6th गियर में स्पीड को ज़्यादा ड्रॉप करा के वेरी क्विकली फिर से ओवरटेक्स नहीं कर पाओगे. यू विल हैव टू डाउन शिफ्ट एटलीस्ट टू 5th or 4th, सो कीप दैट इन माइंड. बट it is not completely hesitating to the point that you have to downshift. If there is an empty space in front of you, you can continue in the same gear. Now let us check out how tractable this engine is. So I'm going to pull over to the shoulder and come to a complete halt. Okay, सबसे पहले तो इस गाड़ी के साथ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी मिलती है. तो एट अ स्टैंड स्टिल इंजन जो है वो बंद हो जाएगी. उसके लिए आपको एक बटन दिया गया है टू द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टीयरिंग कॉलम, सो यू कैन एक्टिवेट इट और डीएक्टिवेट इट डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस. थोड़ा बहुत पेट्रोल बच जाएगा, बट आई थिंक दैट फीचर इज इंट्रूसिव फॉर माई ड्राइविंग स्टाइल एंड माई हैबिट्स. अभी slotting it in 1st gear and just releasing the clutch. No throttle input. Okay, now moving to 2nd gear. Again, no throttle input, just slipping the clutch. If I have to do that, now going into 3rd, slipping the clutch, no throttle input. अभी 3rd gear में ये गाड़ी लगभग 25-26 kilometers per hour पे चल रही है. And when I am not giving any throttle input, the MID is suggesting that I should downshift to the ideal gear. But if I get on the gas, it does pick up pace and there is good torque, there is good power build up. So इस तरह से अगर आप सिटी सिमुलेशंस कंसिडर करते हो, सिटी ड्राइव्स के समय आप 2nd या 3rd गियर में रह सकते हो when you are crawling over bad roads, and if you continue in the same gear, there will be good pulling power with 2 or 3 people on board easily. Unless of course आप steep inclines पे हो, तभी downshift करके you can be in the meat of the power band, in the meat of the torque band, and this engine is genuinely punchy. It is not underpowered, in my opinion at least. Now if I have to tell you the ideal shift points, let us again come to a standstill. इस गाड़ी में by the way कोई drive modes नहीं है, no eco power or sport mode. Slotting it in 1st, just releasing the clutch, no throttle input, no upshift prompt. If I step on the accelerator, upshift का prompt आ रहा है at close to 18 kilometers per hour at 2000 RPM from 1st to 2nd. From 2nd to 3rd, the upshift prompt was at close to 32 kilometers per hour, a little over 2000 RPM. From 3rd to 4th, the prompt is at close to 1900 RPM at over 45 kilometers per hour. From 4th to 5th, the prompt is again under 2000 RPM at close to 63-64 kmph. If I have to upshift, the prompt is coming up over 80 kilometers per hour. Prompt अब तक नहीं आया है, and let us check out. It has come up at close to 85 kilometers per hour and a little over 2000 RPM. So that is something that you will have to keep in mind.
फिफ्थ गियर में अगर आप गाड़ी चलाने वाले हो 2000 RPM विल बी अचीव्ड ओवर 80 km/h. एंड इन सिक्स्थ गियर अगर आप इस गाड़ी को चलाने वाले हो इन सिक्स्थ गियर एट 80 km/h, the engine RPM is going to be just a little over 1500. and then cruising capabilities की अगर बात करें तो 90 kmph is going to come up at under 2000 RPM. और 100 km/h पे अगर आप क्रूज करने वाले हो इस गाड़ी को लेके the engine RPM at 100 is going to be just a little over 2000 RPM. एक चीज मिसिंग है, क्रूज कंट्रोल ये फीचर आपको नहीं दिया गया है इस गाड़ी में. आई थिंक इट इज अ ह्यूज मिस. द कार हैज क्रूजिंग एबिलिटीज, हाई स्पीड क्रूजिंग एबिलिटीज, एंड दैट फीचर शुड हैव बीन ऑफर्ड. सो Citroen, don't just skimp on such important features. You need it when you give us a car which has such good versatility in terms of space and packaging. We will be taking out for a long drive and we need cruise control here in India. Now, engine के बारे में बात करते समय मैंने आपको बता दिया है that the NVH is good, परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है. हाई स्पीड पे भी ये गाड़ी आप काफ़ी आसानी से चला पाओगे. यू कैन अचीव 130-140 वेरी इजीली. ट्रैक्टेबल भी ये मोटर है. नाउ टॉकिंग अबाउट द गियर बॉक्स, 6 स्पीड का ये मैनुअल गियर बॉक्स है. क्लच ऑपरेशन जो है वो थोड़ा हैवी है, आपको एफर्ट लगाना होगा. इनिशियल क्लच ट्रैवल जो है वहाँ पे कुछ होता नहीं है. द क्लच मेन एक्शन इज डीप डाउन and you will have to put in effort for that. But the gear gates, they are very well defined. Again, Hyundai levels of well defined. Soft gear movement, बिल्कुल भी नौची ये gear gates फील नहीं होते हैं. Gear lever ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होता है. It feels plasticky, but shifting gears, no problem at all. Smooth gearbox and precise gearbox. Let me show that to you under hard acceleration. So pulling over to the shoulder, and now we shall accelerate from 0 to 100. All right, so here we go, slotting it in first gear in 3 2 1. Some wheel spin. The engine revs over 6000 RPM, but there is no point doing that. Smooth gearbox, smooth slots. We are already over 100 km/h and I am still in third gear. So ये गाड़ी जो है, when you want to stretch its legs, it is good, it is confident and it works seamlessly. कोई भी झटके फील नहीं होंगे, बिल्कुल भी अनरिफाइंड ये फील नहीं होगी, और इंजन भी ज़्यादा कोर्स सुनाई नहीं देगी. So overall, I think Citroen has done a fantastic job with this vehicle, the way it has been developed and packaged. अभी इस तरह से जब आपको U-turns लेने हैं, visibility is quite good. Today is the first day that I am driving this C3 Aircross and I am instantly at home. Seat height lowest setting पे है. मेरी height है 5 feet 8 inches and I have a good view of the bonnet as well, so you get that typical SUV feel. And seating posture also is comfortable. विंग मिरर्स भी काफ़ी बड़े हैं. इनसाइड रेयर व्यू मिरर की साइज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन रेयर विंडस्क्रीन जो है वो थोड़ी छोटी है. अगर पीछे आप थर्ड रो में 2 पैसेंजर्स को बिठा दोगे तो विंडस्क्रीन की स्पेस जो है इट विल बी ईटन अप. सो यू विल हैव टू मेक पीस विद दैट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट राइड क्वालिटी. Citroen की गाड़ी है, you know that it is going to be comfortable. They have done a very fine job of ride quality in terms of offering you comfort but still not making it very wafty. It is not soft to the point that ये गाड़ी आपको nervous feel कराएगी जब आप घाट रोड्स पे इसे चला लोगे. We drove it quite a few times over 100 km/h and it felt stable at all times. अगर आप ज़्यादा ही sharp turns या sharp inputs दे दोगे on the wheel, थोड़ा बहुत body roll आपको feel होगा because this is a tall car and it is not very wide also. So understand the vehicle, understand the limitations of the vehicle, understand the application of the vehicle and then drive accordingly. लेकिन overall it is very comfortable. Citroen की खासियत है that their suspension setup is well tuned for each of the market wherever in the world they sell their cars, and it shows
in this C3 Aircross SUV as well. It is very well damped. ज़्यादा झटके फील नहीं होते हैं, खड्डों पे से थर्स ज़्यादा सुनाई भी नहीं देते हैं. The brand told us to just bash it over bad roads, but we don't do that with new cars. But still, खराब रास्तों पे से चलाते समय very comfortable. It gives you a nice and polished feel. इस गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो ये है that it doesn't feel quite premium. But everything else it does just right. The engine is good, the ride quality is good, the space is great, and it is just that the touch points are not premium. But if you are okay with that, if you are willing to make a sensible choice which is not flamboyant, you will be very pleased with this C3 Aircross SUV. ब्रिज गैप्स पे से इस गाड़ी को चलाते समय, रम्बलर स्ट्रिप्स पे से इस गाड़ी को चलाते समय, स्पीड ब्रेकर्स पे से थोड़ी एक्स्ट्रा स्पीड कैरी करते समय, नो प्रॉब्लम्स. 17 इंच के व्हील्स का ये गाड़ी इस्तेमाल करती है. स्टिल देयर इज नो फर्मनेस टू द पॉइंट दैट इट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल. सो राइड क्वालिटी टू इज ग्रेट. नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में. नो रियर व्हील डिस्क ब्रेक्स ओनली एट द फ्रंट. ब्रेक पेडल पे जो फील है वो एक्सेप्टेबल है. इट इज नॉट द बेस्ट. इनिशियल बाइट पे जो फील मिलता है वो इतना ग्रेट नहीं है, बट देयर इज रीजनेबल स्टॉपिंग पावर. If you suddenly stomp on the brakes,